Okay. Okay. Very good morning, class. Good morning, sir. Fine. Last couple of class में हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे गैप मॉडल, राइट? उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, उसको हम शेयर कर रहे हैं आप लोग में, राइट? फर्स्ट यू वॉच दैट वीडियो, ठीक है? देन वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर हियर, ठीक है? Let me go to the share screen video on. Hey, I don't have to travel to my school. Lars arrives at the hotel where he will be staying for his weekend conference. He आवाज आ reserved the रही है? room online आवाज आ रही है based सबको? on वीडियो photos की? from the website, Yes, sir. which showed clean, Okay. well-furnished Yes, rooms, sir. and in the Please text watch of the this website, it very also simple said video, there was a cool animation bar. format. Lars immediately goes directly to the hotel bar to rinse the palate after some stressful hours on the road. Unfortunately, he's less than impressed by what he sees. The bar is so far from the sophisticated style he saw on the website, and when he later arrives for happy hour, Wait. ये वीडियो की वॉइस क्लियर है? Yes, sir, clear आ रही. Okay. Wait. the music is horrible and too loud. It's not at all the quality he expected. Customers like Lars have a certain anticipation of the experience they'll get when they have ordered a particular hotel, booked a given trip, or otherwise made a purchase from various types of businesses. When these expectations don't match the way they experience or perceive the Expectations service, don't match the one or experience. more gaps are developed. Therefore, it's important for the employees and managers of the company to try and minimize the difference between the expectations and the actual delivery of a service product. The gap model was developed in the 80s by the three researchers Valerie Yes, Seinhard, sir. Parasuraman, and Voice is Leonard audible. Barry as a very manageable tool to analyze how a company's service quality is delivered in relation to the customer's wants and needs. Making a gap analysis, you use the ServQual questionnaire, which is a contraction of the words service and quality. ServQual uses the customer's expectations and the customer experience or perception of service quality to help companies to identify areas to improve. It is therefore a visualization of the gaps there may be between what the customer expects to receive in relation to a service and what the customer believes he gets. ServQual is based on some dimensions within the service. These include tangibles. This is the stuff you can see, touch, or observe, such as facilities, staff, and equipment. Reliability. Are you able to deliver the promised service reliably and accurately? Responsiveness. This is the speed and effectiveness of your customer service. Assurance. Do your employees have the knowledge and courtesy to create trust and credibility? And empathy, your ability to show consideration and empathy for the customer. Whilst constructing their model, the researchers identified 5 gaps where businesses and consumers have mismatched expectations, which may cause customer service problems. Let me tell you a bit more about the gap model.
The gap model is used to identify and close gaps between customer expectations and the services that are actually provided in different phases. The goal is to improve service quality. Here's a look at the 5 gaps they identified. The listening gap, which is also called the knowledge gap, is the gap that may arise between the management of a given company's understanding of client needs and the customer's actual needs. The gap often occurs when the company lacks sufficient analysis of the target group. The design and standards gap is the gap which occurs between the management's perception of customers' expectations and how this knowledge will be translated into a service design. This means that there is a gap if the business or organization does not correctly identify what the customer wants or needs. In the example with the bar, it might be that management has put more emphasis on an impressive facade and beautiful rooms, whereas the customers focus more on the style of the bar and extra services such as happy hour. The performance gap, or delivery gap as it is also called, is a gap that may arise between service standards and procedures laid down by the management on the basis of customer expectations and how they are actually executed. One example is the lack of training of staff to handle customer needs. When Lars in the example showed his irritation at the bar, staff could not handle them in an efficient and professional manner. A communication gap occurs when a company promises something that raises consumer expectations and then not being able to keep that promise. This results in disappointed customers who then perhaps seek a product elsewhere. The external communication must also be clearly communicated to all employees so that they know what the company promised and so they themselves comply with the communication. Lars's perception of the online advertising of the hotel as a whole did not match what he experienced when he arrived at the hotel. The customer gap, also sometimes called the customer service quality gap, is a gap that relates to the customer's expectations and perceptions. The customer gap is the difference between the customer's expectations of service quality and his experience and thus the perception of service quality. In Lars's case, the elegant cocktail bar with fancy drinks he expected when he entered the bar was not quite the experience he got. Expectations of a company's service quality arise partly from recommendations from friends and acquaintances, but also from the wants and needs you yourself have for the product. They may also arise from previous purchases in the company or similar businesses, and also the company's marketing, both on the web and all sorts of other places, create some expectations. The only thing the company is in control of regarding the customer gap is marketing. In order to be able to close the customer gap, the company needs to understand and define the customer expectations, so the expectations can be understood by the entire company, from those who develop service design and marketing materials to staff members who deliver the service. It sometimes seems the negative experiences are better stuck in our memory, and in fact there are many who believe that the public Danish railway is usually late. However, the fact is that over 90% of the time it's running exactly according to schedule. There is research showing that it takes as much as 20 positive experiences to offset one negative experience. Let's take a look at what you've learned about the gap model. The gap model helps companies and organizations to identify and solve customer service problems. Some key attributes that the model focuses on are reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. The 5 identified gaps you see in this model consist of 1 consumer gap and 4 provider gaps. Provider gaps are imbalances that a service provider can actively work with in order to improve. The listening or knowledge gap, where the company has not correctly identified what the customer wanted. The design and standards gap, where the company does not correctly translate knowledge about the customer to the service design the customer needs. The performance gap, which is the gap between service quality expectations and the actual delivery, and the communication gap that occurs when a company promises something and then don't deliver. The customer gap is the gap between customer expectations and customers' perception or experiences. An understanding of these gaps enables a company to address,
deficiencies, and improve processes and procedures. Okay. तो the short video. ठीक है, ये वीडियो को हम शेयर भी कर देंगे आप लोगों के ग्रुप में, राइट। इसमें जो 5 जो कंपोनेंट्स है, रिस्पॉन्सिवनेस है, टेंजिबल्स है, सारी चीज। सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस इन माय आईज, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस में जो गैप होता है, ठीक है, उसकी वजह क्या है? ठीक है, मतलब पिछला जितना पढ़ाया ओके फाइन, बट अगेन आई एम रिवाइजिंग, रिविजिटिंग इट to be more precise. So that is responsiveness is all about your efficiency. Again I'm coming to the point that your efficiency is your speed. तुम्हारा जो speed है काम करने का, that is your efficiency. And effectiveness happens to be that your efficiency is being matched with the standard efficiency. स्टैंडर्ड में क्या चल रहा है उससे मैच किया जाता है आपकी एफिशिएंसी को, आपकी स्पीड को। अगर वो सही मैच कर रहा है, ठीक है, अगर वो सही मैच कर रहा है, then the result is satisfactory and that you are a satisfactory, you are performing a job in a satisfactory way and your efficiency is exceeding, अगर ऊपर बढ़ रहा है, right? ज्योति, I hope you are with me. ज्योति बैच प्रॉब्लम 3, I hope you are with me. Yes, sir. Okay. तबरेज बात समझ में आ रही है हमको? तबरेज सब कुछ बात बोल रहे हैं, एकदम सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है कि जैसे हमको तुमसे बहुत उम्मीद बन गई, हमको तुमसे बहुत उम्मीद हुई, उस हिसाब से तुमसे हमको रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो फिर तुम्हारे प्रति हमको डिससैटिस्फैक्शन होगा। यस सर। सिंपल है। ओके, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो टारगेट जो ग्रुप है, जो फोकस ग्रुप है, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसका सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, उसका सारा चीज जो है, उसका कंज्यूमर बिहेवियर, ऑल द थिंग, मार्केटिंग रिसर्च, अगर ये काम पूरा होगा, दैट इज की कस्टमर का पूरा प्रोफाइल, टारगेट ऑडियंस का पूरा प्रोफाइल, अगर आपको इसका नॉलेज होगा, इसका इल्म होगा, ठीक है, तो फिर आपकी एफिशिएंसी, आपके पास पूरा नॉलेज है, माइक ऑफ कीजिए, तो एफिशिएंसी आपकी उसी तरह से आप स्पीड को बढ़ाएंगे। तबरेज, यस सर। तो तुम्हारे काम करने का जो स्पीड है, ठीक है, वो तय होता है कि आप कितना कस्टमर के बारे में, या जो भी सिचुएशन है, या जो भी प्रोजेक्ट है, या जो भी काम, उसके बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो इसका एक और हम ना, मतलब एक वीडियो आपको मतलब हम भेज देंगे आपको, दैट इज की बहुत सारा जो मेगा स्ट्रक्चर होता है ना, मेगा स्ट्रक्चर्स डिस्कवरी में आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बहुत सारी चीज, और उसके बाद एक है मेगा किचन। मेगा किचन में आपको अक्सर जो वीडियो आता है उसमें इनका है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, बहुत बड़ा किचन है। एक मिनट, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर IRCTC का किचन है, ठीक है। ये इन दोनों, इस सब वीडियो को आप लोग देखिए। तो दैट इज की हाउ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर किचन मैचेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द विजिटर्स। उसमें इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, कि इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। वो सिंपल एक एग्जांपल जो वीडियो का दिखाया उसमें नहीं, एक बड़े स्केल पे चलते हैं हम लोग, या एक बड़ा कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर ले, लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, और लेट्स से कि दैट पाम जुमेरा एंड ऑल, जो ट्री के शक्ल का आइलैंड, समंदर में जमीन सुखा बनाया गया, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी जो है, राइट, वो तभी उस तरह एग्जैक्ट होगी जब आपको नॉलेज होगा अबाउट द प्रोजेक्ट, about the concept of the project, about the concept of the restaurant, about the concept of the hospital, या जो भी काम आप करने जा रहे हैं, ठीक है। जितना बेहतर नॉलेज होगा, और उसके लिए बेहतर नॉलेज का पूरा जो आपका ये है बेसिस है, जो दारोमदार है, राइट, दैट इज ऑन योर प्राइमरी डेटा। ये बात समझ में आई मेरी? प्राइमरी डेटा, ज्योति, आकृति, बोलिए ना। हाँ, व्हाट इज प्राइमरी डेटा बाबू? What is primary data? तबरेज, यस सर। प्राइमरी डेटा बताइए। प्राइमरी डेटा जो सारी रिस्पॉन्सिवनेस से एम्पैथी, वो सारी चीज डिस्कस हो गई, ठीक है। हम उस रिस्पॉन्सिवनेस तक पहुंचेंगे कैसे, राइट, ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो दैट इज की प्राइमरी डेटा क्या होता है तबरेज?
सोचो, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, जब तक डेटा कलेक्ट होता है एक मतलब ओरिजिनल रिसर्च करके। नहीं बाबू, ओरिजिनल रिसर्च बहुत सारे सोर्सेज से लेकर जो एक पर्टिकुलर जब ज्योति खुद जाकर के डेटा कलेक्ट करती है, सिचुएशन का एनालिसिस करती है, यस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। खुद डेटा हासिल किया खुद से, ठीक है, दैट इज फॉर प्राइमरी डेटा। और मान लीजिए कि हमने डेटा हासिल किया, हमने सिचुएशन का एनालिसिस किया, उसके बाद ज्योति को दिया, तो वो डेटा ज्योति के लिए सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ज्योति अगर खुद से जो डेटा हासिल कर रही है, तो लेट्स से कि एज फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ये बेहतर, हम अक्सर जो शादी का एग्जांपल देते हैं, घर में शादी है, राइट, तो जो जितने लोग जो काम करने के लिए है, ठीक है, वो खुद भी जा करके जो मैरिज हॉल है उसका वो सर्वे करते हैं सर, सर्वे, ठीक है। जो हेड ऑफ द फैमिली है, उन्होंने जॉब अलॉट कर दिया, लेकिन जॉब का एग्जीक्यूशन जब तक सर्वे नहीं होगा उस मैरिज हॉल का, ठीक है, एग्जीक्यूशन आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो बात हो रही है कि दैट योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस शुड मैच द इफेक्टिवनेस, ये तभी हो सकता है जब आपके पास प्राइमरी डेटा होगा। मतलब उसको इस तरह से या बोल दें हम कि जितना ज्यादा नॉलेज होगा अबाउट द फोकस ग्रुप, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द प्रोजेक्ट, या उसको इस तरह से बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप प्राइमरी डेटा पे काम करेंगे, खुद से सर्वे करेंगे, खुद जा करके, ठीक है, योर फुट वर्क, योर फुट एफर्ट, तो फिर आपका गैप कम होगा। और अगर सेकेंडरी डेटा पे हम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कोई चीज, तो वो आपके लिए सेकेंडरी है, राइट, तो उसमें एग्जीक्यूशन आपको करना है, तो वहां प्रॉब्लम आ जाता है। ये सर, बात समझ में? सर हम मेंटली स्टेबल हो जाते हैं कि हम लोग अपने आंखों से देख चुके हैं या उसको सब कुछ। कोई चीज आप अपने आंखों से नहीं देखिएगा, ठीक है, मतलब राइटली सेड प्रियंका, कि जब तक आप कोई चीज अपने आंखों से नहीं देखिएगा, आपको उसका नॉलेज हो ही नहीं सकता है, दैट सिंपल। तो सिचुएशन को जितना ज्यादा आप उसको एनालाइज कीजिए, उसका सर्वे कीजिए, तो फिर गैप मॉडल जो है, तो जितना भी गैप्स है वो आपका मिनिमाइज होगा। और जितना आप सेकेंडरी डेटा पे काम करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका गैप मिनिमाइज नहीं होगा, गैप मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। बस इतनी ही सिंपल बात हमको बोली गया। इसमें और कोई सवाल है तो पूछिए हमसे। जैसे नीड्स एंड वांट्स की बात हो रही थी, तो नीड्स एंड वांट्स को आप तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसको सही से फ्रेम कर सकते हैं, जब सिचुएशन का और फोकस ग्रुप का आपको ज्ञान हो, आपको नॉलेज हो, दैट सिंपल। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सर मनीष, रोल नंबर 63 इन प्री, ओके, ठीक है, सब इन प्री, ओके, एक सेकंड। टैंजिबल्स में, ठीक है, फिजिकल एविडेंस, तो जो चीज जरूरी है, ठीक है, उसको आपको इंतजाम करना ही होगा, तभी जाके आप सर्विस बेहतर दे सकते हैं। अब टैंजिबल्स में कुछ चीजें की कमी रह गई, तो आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते आप, ठीक है। तो ये सब 5 जो मॉडल ये है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आप लोग फिर से विजिट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नीड को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली जरूरत क्या है। कस्टमर का नीड क्या है सर, वो समझना बहुत जरूरी है। नीड का मतलब हुआ बाबू कि जैसे जो भी खाना है, तो अभी खाने को सजाया बहुत जा रहा है, अगर फूड की बात करें, उसको सजाया बहुत जा रहा है कि दिखे अच्छा, लेकिन एक्चुअली नीड है हेल्थ। अगर हेल्थ खराब कर रहा है वो खाना, तो एंड ऑफ द डे वो मॉडल चलेगा नहीं। इट शुड इंस्टॉल हेल्थ, अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, दैट सिंपल सर। तो उसी में है कि आपका जो परसीव्ड, जो आपका नॉलेज है, आपने क्या परसीव किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ब्रेन क्या रीडिंग कर रहा है, क्या परसीव कर रहा है, वहां पर आपका सारा चीज ये है। और वो अगर पॉइंट क्लियर है, तो फिर आगे सारी बात क्लियर रहती है, एग्जैक्टली क्या नीड है सर। चलिए आज के लिए क्लास शॉर्ट ही रखते हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक हमको क्लियर करना था, इस वीडियो को हमको दिखाना था आपको सर, ओके।
क्या लाइव स्ट्रीम हम ऑफ कर